Okay, so welcome friends and students. So today is the basically the second lecture of this around 30 days series in which we will cover the 30 different topics of psychology in relation to what its importance with the UGC NET. Okay, so like it's a kind of a last minute revision. So many of you might be struggling with a kind of what to study, what not to study. So in the series, each day will take one important topic, and out of that important topic, we'll study the important concepts related to it. So it will give you the kind of the basic revision kind of thing. So the last class we have discussed about the schools of psychology. You must have gone through it, and I hope you have enjoyed it. So today basically we'll discuss about the Indian psychology. Okay. So before we talk about an Indian psychology, there are something which needs to be understood. Okay. What we'll study, basically, there are four different topics we'll study: body, mind, consciousness, Eastern perspective, academic history in India, and Western and Indian paradigm. अभी आजकल अगर अपन देखें previous कुछ years से like 4-5 years से, so there is a kind of growing trend of kind of the questions which are basically coming from an Indian psychological perspective. And there is also the reason behind it. Somewhere government, you might, if you go through the NEP 2020 National Education Policy, so government is trying to, especially when we talk about the social sciences, so government is trying to decolonize the subject. What does that mean by decolonization? कि अगर अपन sociology, social sciences के psychology इन subjects को देखें तो they are heavily influenced by the Western theories and concepts and other. The Western perspective does not mean there was no any Indian psychology and we haven't think about psychological perspective per se in our country. Rather, if we talk about Indian psychology, it is much more deeper and broader in comparison to the Western psychology which we study. Okay. So basically, before we proceed into that, so that's why there is a growing trend increasingly for past say 4-5 years से. और अभी तो मैंने आपको शायद लास्ट ओरिएंटेशन क्लास में बताया भी था कि गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इंडियन नॉलेज सिस्टम एजुकेशन मिनिस्ट्री में ही एक अलग से इन्होंने IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का डिवीजन बनाया है. And in some universities and like in some IITs like IIT Kharagpur, IIT Mandi, यहाँ पे इन्होंने IKS का स्पेशल जो है एक सेंटर स्टार्ट किया है जहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड जो है अलग अलग जो है वो रिसर्चेस और टीचिंग जो है टीचिंग करिकुलम में उन सारी चीज़ों को शामिल किया जा रहा है. तो उस इंडियन नॉलेज सिस्टम में there is a lot of it's a kind of an interdisciplinary thing where the architecture, where is kind of historical study, languages, art, craft, and all things comes. But one important thing is also the psychology of mind, which is also very important, essential element of it, which also comes. So there's a growing trend in short, I'm trying so to say. So we cannot basically neglect this topic. Okay, and that's why it is very important. So before we proceed into it, we need to distinguish between three important concepts. One is an Indian psychology. Listen this word carefully: Indian psychology. Second is psychology in India, and the third one is indigenous psychology. Indigenous psychology is separate categorization in itself. So ये दो चीजें, these two things are not similar, Indian psychology and psychology in India. So Indian psychology is basically what we called as a system of psychological thought rooted in Indian traditions and practice. So when we are talking about psychological thought, what does it mean? Ki how one sees or perceives the human mind. Okay, thoughts, emotions, behaviors, and all those things. So, a system of psychological thought rooted in Indian traditions and practices.
has its own assumptions about person, mind, consciousness, suffering, liberation. So Indian psychology is basically very broad in itself. Okay, we'll talk about it in this very class. So ancient उसमें अगर अपन चाहें एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स को पढ़ें या अगर हम पुराने ऋषि मुनियों की बात करें, अगर हम भगवत गीता के को जाने या फिर बुद्धिज्म को देखें तो हाउ दे हैव डिस्क्राइब्ड द माइंड, the very thing called mind, how they have explained and described the concept of thoughts and emotions and how our behavior gets influenced by it and all these things. This is what is basically what Indian psychology is. We might find some similar words. Last class, when we were talking about the schools of psychology, we use this word called consciousness. We use this word called mind. We use this word called ego. Ego तो आप बहुत सुनोगे, फ्रॉइड के पूरे उसमें ego central concept है, id ego, super ego. But the way Western schools explain and describe and give meaning to the word ego or mind or consciousness is entirely different from the way Indian perspective see these three important things. Okay, and we'll discuss about all these things. So that is basically what an Indian psychology, Indian way of looking at the things, or like how in our culture, in our country, we have looked towards this very structure of what consciousness is, what mind is, how our emotions and thoughts and attachment and all these things basically forms, and how our behavior get influenced, and so on and so on. So basically, so that is Indian psychology. Basically, what we what we are studying for past see 100 years और सो जब से हमने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करा अपनी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, तो हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, दैट इज बेसिकली व्हाट psychology in India is. So in short, academic psychology. So you see Indian psychology is way different, very different. But psychology in India is very much similar to, basically, because we are importing all the concepts from the Western thinkers and theories and all things. So it is heavily influenced by the Western, Western sort of thing. So that's why we say that the Indian social sciences or even the psychology is basically heavily colonized. Colonized ka matlab the Britishers came and ruled on us, and they give political freedom to us and left our country in 1947. But somewhere psychologically, or when we're talking about an education system, somewhere they have a very deep imprint and somewhere they still rule us. Understand? So, ऐसा समझो कि what basically we study one thing, then how we assess that whatever we study, so how we assess that very assessment is also Western oriented. That be it our exams, be it basically what we call as a knowledge. मैं knowledge को तभी मानूंगा जब वो से किसी वेस्टर्न पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश होगा. सो इट्स देयर ओन बेसिकली. जब मेरे पास उसके लिए एविडेंस होंगे, वो एम्पिरिकल रिसर्च होगी एंड ऑल दैट थिंग. सो ऑल ऑफ द नॉलेज क्रिएशन सिस्टम and the knowledge driving system and assessment system is basically Western oriented. That's why we called it colonized. And whether it is good or bad, or what are its pros and cons, we'll discuss basically in today's class. And the third one is basically indigenous psychology. So indigenous psychology is basically culturally relevant psychology developed for a local population. So see, in India, basically the cross cultural, because Indian society is multicultural, there is no any uniform culture. If you go from say north to south or from east to west in such a big geography, you see a lot of different cultures, customs, lot of different kind of the festivals, and the languages, and a lot of other things. So basically a different so might be the core theme might be they all the normal local people behavior, local population behavior might have some
connection or influenced by the broad Indian psychology, but they have developed their own kind of, the kind of, own set of kind of, the what we called as rituals, what we called as the behaviors, the kind of the festivals, a lot of other things. So that is basically depending on their kind of, culture and everything. So that is basically what indigenous psychology. So under this umbrella of Indian psychology, there might be different types of indigenous psychologies we might have in our country from looking at. So indigenous psychology, so might be tribal people living in, say, at some part of the country, not just here, but even in the jungle of Amazons or somewhere, they have their own set of rules and different other things to look at the things. Right. So that is basically what an indigenous psychology may use any theory. Indian psychology is more than mere cultural adaptation. Are you getting? उसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इंडिजिनस साइकोलॉजी में. आई डोंट नो कि some there was this series on the Netflix. उस Netflix सीरीज में था कि एक शायद मेरी ख्याल में मैक्सिको या फिर इक्वाडोर समवेयर द साउथ अमेरिकन कंट्री वाज देयर. फिर when basically plane जो होता है वो that got lost into the jungle and crashed. So in that plane there were 5 people, 1 women and 3 4 children were there. So now the jungles were so deep that a lot of people were like they were unable to find their dead bodies and everything. So and even they have tried, even the army of the country, they have tried for several days, but they couldn't get any clue. And in fact, finally they have found the spare parts or the crash parts of the aeroplane, but the people involved into, they found 1 or 2 dead bodies, but rest of the 2 3 children's, they were unable to. So there was the hope that might be these 2 3 children are alive. So they went for the search here and there, but they were unable to find. So they basically contacted the local population, local tribal population who was living in those jungles for past thousands of years. So they have when they have contacted and when they started trying, to find those little kids. So do you know what technique they used? Firstly, they found here and there making different kind of noise and all that thing. But finally, when they were unable to find through these normal measures, what they think is that finally they took what their the drugs they called is basically, you might have heard about this ayahuasca. Ayahuasca is a very popular psychedelic drug in Amazon jungles, in these jungles. So they treat it not as a kind of something. They treat it as that when somebody takes it, he can connect with the देवता. उस जो रीजन में जंगल में देवता रहते हैं, जंगल को वो लोग देवता मानते हैं, उनसे उनका कांटेक्ट होता है और वो देवता फिर को गाइड करते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, अगर कोई कैटास्ट्रॉफी आने वाली है या उनके पास में कोई प्रॉब्लम आती है. तो somebody take and then he considered them. There was a whole ceremony was there. Then he started making contact with the devtas of the jungle, and then that devta guide them to move into that direction so that they can find the kids. And they went on, they followed it, and they finally found. So what I'm trying to say is this, that culturally relevant psychology ways, अगर अपन इसे चीज को मेन स्ट्रीम किसी से मेन स्ट्रीम उसमें बात करेंगे कि जंगल जिसको अपन बोलते हैं ना, इंडिया में तो अपन बहुत सुनेंगे कि ये देव, अगर आप हिमाचल में जाओगे, उत्तराखंड में जाओगे, अलग अलग जगहों पर जाओगे, तो इसमें देवता आता है, इसमें जो है वो माता आती है और ये हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना खराब है, ऐसे देवता रुष्ट हो जाएगा, या दूसरे जो आपस के रिचुअल्स होते हैं ऑल दैट थिंग. दिस इज बेसिकली द कोर पार्ट ऑफ इंडिजिनस साइकोलॉजी व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द बेसिकली व्हाट वी से कल्चर टू कल्चर. दैट्स व्हाट we're trying to. Might be somewhere in the future we might talk about it in the detail in the cross cultural psychology domain and all that. So this is basically what it is: Indian psychology, psychology in India, and indigenous psychology. Okay. Uh, so first is basically the foundational body, find the foundational model of Indian psychology. So it consists of the 3 components: body, mind, consciousness. Body, mind, consciousness. या फिर हम एक तरीके से समझें तो there are 3 layers of the knowledge.
basically. Okay. Body consists of our nervous system, sense organs, motor apparatus, physiological base. Like my, what is my brain? A lot of people ask, what is the difference between body and mind, basically, or say, what is the difference between an interesting, what is the difference between the brain and the mind? So, brain is considered as what is known as a kind of a hardware which you can touch, which you can see, which you can sense. अंडरस्टैंड ब्रेन को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, ब्रेन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसका साइज होता है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. So it's a kind of a machine, hardware machine. Mind is considered as a kind of a software. So software को we cannot see. Basically हम software is a kind of an information, okay, passing from one place to another which we cannot see. Are you getting? Which we cannot see, but it is running. It is running. Okay, that is basically what is known as the mind. Okay, and the third one is basically what is known as basically what, the consciousness. Okay, so see, for example, say the kind of, say there is a bulb. Okay, and the current is running in the wire and coming out through the bulb. Okay, so assume this, that this very bulb and the wire associated with it, it's a kind of the body which we can see. Are you getting? It is in front of us. We can sense the current which is running through it, but we are unable to see it. That is a kind of, say, the mind. Are you getting? And the third, when the light bulb switches on and when it lightens the whole room, जब वो पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, तो that is a kind of the behavior which is directly visible. Understand? Through the body and the mind. That is what in a simple term. Okay. अब इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो बॉडी, ये एक हमारा शरीर जिसको हम नश्वर भी बोलते हैं, पेरिशेबल बॉडी. It consists of nervous system, brain, sense organs, motor apparatus, physiological base. Mind is an instrument of, mind is an instrument, यानी a kind of a software. वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं आपको कहीं दिखेगा. अगर आप ब्रेन की चीड़ फाड़ करोगे तो आपको कहीं भी माइंड नजर नहीं आएगा. आर यू गेटिंग? विंडोज इसमें इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आप इस लैपटॉप को खोलोगे, चीड़ इसको तोड़ोगे, इसको पेज के सारी चीजों को देखोगे, तो ये नहीं कि कोई चीज निकल के आपको विंडो निकल के सामने दिख जाएगी कि ये साहब विंडो. विंडो इज अ सॉफ्टवेयर. आर यू गेटिंग? सो लाइक द माइंड, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉग्निशन. कॉग्निशन का मतलब दैट इज रिलेटेड विद द थॉट. इमोशन, इमोशन का मतलब दैट इज रिलेटेड विद द, and volition, volition का मतलब to take a decision about what is right and what is wrong. Okay, so technically from Indian perspective, it's not our brain which takes the decision about, again, what is right and what is wrong. Understand? क्योंकि अगर हम ब्रेन के ऊपर सारी चीजें केंद्रित कर देंगे कि हमारा ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है, तो इसका मतलब समवेयर वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिटर्मिनिज्म वेयर नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, because brain is basically what, a kind of a hardware. Who is directing that hardware? That is an important point. Who is directing and who has a control over that hardware? Are you getting? Who directs कि we need to move into this direction or that direction? That is basically what our mind is, the software. So it is an instrument of cognition. Are you getting? तो बेस जरूरी है. विदाउट हार्डवेयर के माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट. अंडरस्टैंड? बट विदाउट माइंड, brain in itself is nothing. Are you getting the point? Brain in itself is nothing. So mind and brain both are basically what, or a body basically both are interrelated. One is a software, the other one जो है वो हार्डवेयर. हार्डवेयर के ऊपर जो है हम सारा के सारा जो है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है इन दैट सेंस. तो लाइट जो है, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिसिटी या करंट विदाउट वायर के, विदाउट बल्ब के नहीं जलेगी, फिर उसका कोई यूज नहीं है, भले ही वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कटिंग. तो हमें हार्डवेयर तो चाहिए, हमें बल्ब भी चाहिए, हमें वायर्स भी चाहिए, लेकिन साथ में जो है
विदाउट अगर उसमें करंट ही नहीं होगा तो उसका भी अपने आप में कोई यूज है। गेटिंग द So body, mind is an instrument of cognition, emotion, volition, mediates between body and consciousness. अभी तो हम तीसरी चीज पे तो आए नहीं है, अभी तो हम उसी की बात करें। और थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, जिसको अपन आत्मा बोल सकते हैं, पुरुष पुरुष बोल सकते हैं, फिर चैतन्य बोल सकते हैं, कुछ भी बोले, दैट इज द सुप्रीम। This consciousness is what in Indian psychology termed as the knower, यानी कि ज्ञाता, जानने वाला, ज्ञानी, अंडरस्टैंड, या फिर भोक्ता, यानी कि जो एंजॉय कर रहा है और सफर कर रहा है, ठीक है, जो कि दुखी हो रहा है या फिर सुखी हो रहा है, या फिर कर्ता, एजेंट, डूअर। इन तीनों चीजों को हम, जो पर्सन है, व्यक्ति है, या जिसको जीव बोल रहे हैं, या तो वो ज्ञाता है यानी कि जो चीजों को जान रहा है, वो भोगता है यानी कि जो सफर कर रहा है, एंजॉय भी कर रहा है किसी चीज को और किसी चीज को दुख भी पा रहा है, और तीसरा बेसिकली वो जो है वो करता है। अब अगर अपन डीप डाउन जाएंगे, अगर अपन वेदांत में जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली बोलेंगे दैट जीव जो है एक, यानी कि जो मेरा होना है स्वयं का है, जिसको मैं आत्मा बोल रहा हूँ, दैट इज ओनली द ज्ञाता, ही इज नॉट इवन द भोक्ता एंड द कर्ता। बट अगर अपन एज अ होल इंडियन साइकोलॉजी को सोचें, तो उसमें एज एन इंडिविजुअल को या तो नोअर बताया गया है, फिर वो एंजॉय, या फिर वो भोगता है, ज्ञाता है और करता है। क्लियर दिस? दिस इज बेसिकली व्हाट, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ कॉन्शियसनेस व्हिच इज नॉट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ब्रेन। हियर देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न एंड द इंडियन साइकोलॉजी और द पर्सपेक्टिव। अभी भी अगर आप ऐसा समझिए, आज से अगर 15-20 साल पहले किसी भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में जाके कॉन्शियसनेस का नाम लेते और कॉन्शियसनेस के बारे में बातें करते, तो you would be treated as a pseudo scientist or an unscientific person, because there was no way to study consciousness, how to study. And even the top neuroscientists who are studying or researching on the consciousness, at the most, what they are telling is that consciousness is nothing but just the byproduct of the brain। बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन का मतलब, देखो यहाँ पे जो है वो दो नर्वस न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में जब कनेक्ट होती हैं और आपस में एक दूसरे से टकराती है, तो यहाँ पे हमारे अवेयरनेस का सेंटर है, और इस अवेयरनेस की सेंटर पे हमारा कॉन्शियसनेस का पॉइंट है या फिर प्लेस है। अंडरस्टैंड? यानी कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, या हमारी चैतन्यता है, या फिर जो हमारा होश या अवेयरनेस है, वो हमारे ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इंडियन साइकोलॉजी इज saying that consciousness is altogether a very distinct from the brain. So that's why they say that when the person take birth, जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है और फिर कोई व्यक्ति मरता है, तो उसका शरीर मरता है, उसका ब्रेन मरता है, लेकिन उसका चैतन्य नहीं मरता। चैतन्य की कोई मृत्यु नहीं है, वो अमर है। अंडरस्टैंड? मतलब the consciousness travels from one body to another. That's why we lot most of the Indian, all the religions which have been originated in India, they believe in the multiple cycles of birth. अंडरस्टैंड? यानी कि हम जो है इंडिया में पुनर्जन्म की धारणा में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस डज नॉट डाई, ओनली द बॉडी डाइज। Are you getting the point? That is basically, so it's not the byproduct of the brain. Even if the brain is there, consciousness will remain there. But obviously, since we are talking about the software hardware thing, conscious consciousness को reflect होने के लिए हार्डवेयर की यानी कि ब्रेन की जरूरत है। बट Western science may they believe that brain is supreme and consciousness comes out of brain. Here we say that no, consciousness is the most supreme thing, and yes, it maybe find its expression through the brain and the whole body, but in the behavior. But it does not require it. It has its own separate independent existence. That is basically what we are talking.
It's a very deep subject. Somewhere might be again we study it in the future, but I think अभी तक के लिए इतना we won't go into it. Otherwise आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इसको overload जाएगा. तो इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इंडियन साइकोलॉजी में हमने 3 levels ऑफ नीड की बात करी है. दैट देयर आर 3 levels ऑफ नोइंग. हम 3 तरीके से जान सकते हैं, है ना. सबसे पहला है श्रवण. श्रवण का मतलब सुनकर या फिर देखकर, यानी कि अपने सेंसेस से. अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ रिलीजन्स, जैसे कि अगर अपन जैनिज्म की बात करें तो वहां पे ट्रेडिशनली एंशिएंट उसमें जैनिज्म के फॉलोअर्स को तो बोला ही श्रावक है, श्रावक. क्योंकि जैनिज्म में इनिशियली देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ अ टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक तो बाद में बनी कि जो जैनिज्म में जो तीर्थंकर हुए, इन्होंने अपना ज्ञान बोल कर दिया. बोल के वो चीज ट्रांसफर हुई वन प्लेस से अनदर प्लेस. और इवन इसीलिए उसको श्रावक परंपरा कहा गया. और ये भी नहीं, अगर अपन ट्रेडिशनल इंडियन गुरुकुल व्यवस्था या बहुत सारी नॉलेज सिस्टम को देखें तो नॉलेज हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इवन इन द बुद्धिज्म और इवन इन द डिफरेंट अदर ट्रेडिशंस थ्रू द गुरु जो है वो बोलता था, शिष्य सुनते थे, उस चीज को असिमिलेट करते थे और उस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करते थे. देयर वाज नो एनी रिटन वर्ड्स वर देयर. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हमारे यहाँ पे शास्त्र शुरू में नहीं थे, शास्त्र बहुत बाद में बने. सो दैट इज बेसिकली व्हाट परंपरा. लेकिन अगर अपन नॉर्मल उसमें भी देखें तो भी देर आर 3 levels ऑफ नॉलेज. वन श्रवण की बहुत सारी चीजें आप जीवन में केवल देख के और सुनकर ही जानते हैं, और टेक्सचुअल एक्सपोजर हमारे सेंसेस से. तो अगर इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर आप ठीक ढंग से सुनना और देखना आ गया, केवल अगर आपको ठीक ढंग से देखना और सुनना आ गया, रिसीव करना आ गया, तो यू विल नो ऑल द what we called as mysteries of the universe and about your own samples. Just if you know the correct listen. Because many of us don't know how to listen and how to observe. That is Shravana. Second is मनन. मनन का मतलब कोई भी चीज जो हमारे दिमाग में गई है उसको हम रिफ्लेक्ट करें, उसके बारे में सोचें, उसको रीजन दें. सो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मनन. चिंतन मनन जिसको बोलते हैं ना, कभी कभी चिंतन मनन कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिकली व्हाट, उस चीज के बारे में सोचना, उसको दिमाग में घुमाना, क्या ये सही है नहीं है, उसको एनालाइज करना, उसको क्रिटिकली देखना एंड ऑल दैट थिंग. बेसिकली दैट इज अ मनन. तो हमारा जो अधिकतर ऐसा समझो कि नॉलेज का जो है अभी सिस्टम, वो श्रवण से स्टार्ट होता है और अभी तक मनन पर रहता है. ठीक है. जो हम एग्जाम्स देते हैं या कोई रिसर्च करता है, दैट इज बेसिकली based on मन, reflection. The third one is basically nididhyasana. Nididhyasana का मतलब meditative realization. So it is not just about what we called as that we have thought about something, we have listened something, we have seen something. It's about something beyond all that things. Certain kind of knowledge cannot be grasped just by looking at it, observing, or by listening, and just not by thinking. There is something which is way beyond all these things, which can come only when we do the meditation. Knowing becomes being. Truth is lived. Understand? One is an object. उस ऑब्जेक्ट को जानना, that is the knowing. But वो खुद ऐसा हो जाना. एक स्टेटमेंट बोलता है कि this is the truth. Okay? Okay. Then I know the truth. Okay? That is a kind of say the manan. But when I say I become the truth, दैट इज बेसिकली वो निधिध्यासन, मेडिटेटिव रियलाइजेशन. तो हमारे यहाँ ऐसा समझो कि एक तरीके का ज्ञान होता है जो आंखें खोल के मिलता. ठीक है. मैं आंखें खोल के चारों तरफ की चीजों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ खोज रहा हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. दिस इज ऑल बेसिकली द टाइप ऑफ द नॉलेज द ओपनिंग योर आईज. One kind of knowledge comes when I close my eyes, when I do the meditation and all that thing. So that is basically what is called as Nididhyasana. Traditionally, historically,
हजारों सालों से ये निधिध्यासन की परंपरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से पहले हमारे सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट थी। और इंडियन साइकोलॉजी में मानते थे कि ज्ञान का मार्ग केवल आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके भी आता है। बहुत सारा ज्ञान बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर भी आता है। गेटिंग? नहीं देते। Okay, moving into next. So basically, we'll talk about the six basic systems of psychological thought and insight systems related to. First start with Bhagavad Gita, Buddhism, Sufism, Integral Yoga, and Patanjali. वैसे तो these are not the six philosophical schools, वो सारे के सारे अलग है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने हमने नेट का जो हमारा सिलेबस है वहां से निकाला है। तो भगवत गीता में जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड विद द गुणास। गुणाज में आपने सुना है सात्विक, राजसिक, तामसिक। Okay, that is the three basically gunas which we talk about. और इसको अपन अगर अपन दूसरी भाषा में बोले तो इट्स अ काइंड ऑफ द टाइप्स which type is dominated in a one person. So one person might be more sattvic, the one person might be more rajasic, and the other person might be more tatsic. So all these three have the different kind of kind of characteristics. So sattvic is related with a more kind of equilibrium, more at peace. Rajasic is more about basically what we called as restless, understand, or more a kind of doer sort of thing who is unable to sit silently. Tamasic is more related with the lethargic and all that thing. So it's a kind of a temperament, also we might call it. So Bhagavad Gita talked about the three gunas, Rajasic, Tamasic, and Sattvic. And then the Bhagavad Gita very famously talks about the Karma Yoga. तो आपने लाइन तो सुनी होगी भाई, कर्म योगा का मतलब कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखे। यानी कि इक्वानिमिटी के साथ हमारा काम है विदाउट डिजायरिंग फॉर द रिजल्ट वी जस्ट डू आवर वर्क and left the result on the existence whatever comes, because that is not in our hand. In our hand is basically just doing the karma. एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि किसने कहा हमारे हाथ में नहीं है, हम चाहे तो पत्थरों को तोड़ सकते, हम चाहे तो पहाड़ में से रास्ता निकाल दें, हम चाहे तो ये कर दें। लेकिन अगर आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, अब वेस्टर्न साइकोलॉजी, जैसे मैंने पहले भी शायद कभी जिक्र किया हो, देयर इज अ वेरी फेमस बुक कॉल्ड Daniel Kahneman ki Thinking Fast and Slow, which talks about the decision making, judgment, and all that thing. So it says that after doing thousands of experiments, now the modern psychology says that luck plays a very important role in one person's life. And when we are talking about the luck, it means we are talking about some factors which are outside of our scope, means which outside of our control, which we cannot control it. So what karma yoga is saying, that we can control our karma, what I am doing, that I can control, whether I need to do it, I need not to do it, I should change the way I am doing it, XYZ. But I cannot control the result, because there might be multiple factors are there over which I don't have a control. आप देखो, एक बात बताओ, अभी आपने सुना होगा आजकल चल रहा है नीट की परीक्षा, क्योंकि 22 लाख स्टूडेंट्स ने वापस इस एग्जाम को देंगे। अब कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने खूब सारी तैयारी करी थी, सालों से पढ़ा था, 12-12, 15-15 घंटे पढ़े थे, है ना? अब क्या हुआ? पेपर आउट हो गया। क्या उनके हाथ में था? उनके हाथ में वो कुछ ही कर ही नहीं सकते। कितना ही उन्होंने कर लिया वो, बट अगेन दे हैड टू अपीयर अगेन। Are you getting? Then there are multiple factors again came. What I'm trying to say is result is not enough. That is what the karma yoga talks about. Equanimity, भगवत गीता talk about equanimity, यानी कि समत्व। सभी, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उसमें समत्व की भावना, दैट इज बेसिकली नाम है, इट्स अ काइंड ऑफ द बैलेंसिंग। Normally what happens, normally we want or we desire something which is good for us, which we like, and we have an aversive feeling towards something, or we move away from something which we don't like or hate.
but technically जो है what Bhagavad Gita is saying that life में whatever you do and at whichever position you are, even if you become the prime minister of India, are you getting the most powerful? Even then, there is a lot of the challenges or the negativities will come in your life. So how you deal with that? So if you remain equanimity, you can overcome all these things easily. Then Swadharma. Swadharma is also very important part of the Bhagavad Gita where आपने सुना होगा वो अर्जुन जो है उस समय जो है वो लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहा है ना, महाभारत का युद्ध चल रहा है। तो कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारा धर्म है लड़ना, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने स्वधर्म से भाग नहीं सकते। स्वधर्म का मतलब माय इनर टाइप, अंडरस्टैंड, मैं अंदर से मेरा किस तरीके का पर्सनालिटी टाइप है, मेरा प्रोफेशन, मेरा आउटर बिहेवियर उसी तरीके का होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एन इनकॉन्ग्रुएंसी और differences between my inner and outer. If I pursue whatever I am from inside, I will achieve the highest possible thing. But internally I am something and externally if I am doing something, there is a mismatch and there will be a lot of trouble. It's a very, very, very relevant and very important concept which we will talk about somewhere again in the future. स्वधर्म एंड निष्काम कर्म वही फल की इच्छा हो। तो अभी अपन बात कर रहे थे, अब आपने एक चीज देखी कि हम बात कर रहे थे इंडियन साइकोलॉजी इज वे ओल्ड, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अभी फ्रॉइड साहब ने 1920 में या 30 में he came with the concept of unconscious and we say it's a second force and he has just given the very radical idea of unconscious and all that thing and dream analysis. In India this concept of अगर आप योगिक टेक्स्ट को पढ़ोगे और उसको पढ़ोगे तो this concept of unconscious dream analysis and all that thing and thousands of years. Are you getting the point? That is very, very, very useful. It's a way deep. अगर ऐसा समझो, सही बात तो ये है कि अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं तो जहां वेस्टर्न साइकोलॉजी सोचना बंद करती है तो इंडियन साइकोलॉजी स्टार्ट हो। सच अ डीप डेप्थ इज देयर। गेटिंग? सो दिस इज बेसिकली तो अब बहुत सारे तो लोग इनफॉर्मली, कोई फॉर्मल क्वेश्चन है बट हु वाज द फर्स्ट साइकोथेरेपिस्ट इन इंडिया? दैट्स अ काइंड ऑफ द कृष्णा हु हैज काउंसल्ड द अर्जुन क्राइसिस, इंटरनल जो उसके अंदर क्राइसिस चल रही थी एंड डिप्रेशन चल रहा था। सो दैट इज नाउ ओके, दैट इज अ भगवद गीता। सेकंड कम्स द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में you heard about the Siddhartha who lived in Siddhartha who later renounced the world and he established this Buddhism. He talks about the चार आर्य truth कि इस दुनिया में दुख है, अंडरस्टैंड, इस दुनिया में दुख है, ये सत्य है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। ओके, दैट इज द थिंग। उस दुख का कारण है, उस दुख का कारण क्या है? दुख क्या है? दुख, हर दुख है। दुख क्या है? बीमारी का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, मृत्यु का दुख है, चीजों को खोने का दुख है। कोई चीज आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, आज है कल चली जाएगी, दुख होगा, अंडरस्टैंड। दुख इनएविटेबल है जहां भी है, जैसे दैट इज द फर्स्ट। उस दुख का दैट इज द फर्स्ट आर्य ट्रुथ, आर्य ट्रुथ, नोबल ट्रुथ जिसको बोला आर्य सत्य। सेकंड इज उस दुख का कारण है। दुख का क्या कारण है? अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, अटैचमेंट इज द मेन रीजन। सो आई गेट अटैच्ड विद समथिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो अगर मैं अटैचमेंट, पहले दूसरा, तीसरा उस दुख से दूर जाने का उपाय है, अंडरस्टैंड, या उस दुख को दूर से दूर जाया जा सकता है। So that is basically what, if I work, if I look at the impermanence of the things, if I look at the what we temporariness of the things, if I start getting rid of my attachments, then I can move, understand, और उस दुख से दूर जाने का उपाय। ठीक, तो दुख है, दुख का कारण क्या है? अटैचमेंट है। अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर चीज इम्परमानेंट है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ड्यूरेशन अलग अलग है। कोई चीज जो है वो, जैसे, ऐसा समझो कि मेरे थॉट्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं,
मैं 1 मिनट में जो है हो सकता है कि 200 थॉट्स देखता हूँ। कोई चीज होती है जो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहती है, बट थोड़ा सा ड्यूरेशन का ही फर्क है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज परमानेंस अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। तो उन्होंने तरीका बताया किस किस का, माइंडफुलनेस एंड nirvana. So he has given the concept of eightfold path, that is Ashtanga mark, है ना, of four noble truths. Then there is a concept called the third is basically Sufism. Sufism is all about basically the key concept क्या है, love and surrender, where basically the sadhak, the Sufi or the devotee, एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना, अगर अपन हिंदुइज्म पर्सपेक्टिव से देखें तो भक्ति मार्ग, वेयर basically the sadhak considers himself as a kind of the lover or the beloved of the supreme, and पूरा की पूरा जो है वो अपने आप को उसके सरेंडर कर देना, फना हो जाना, that is basically what. So that is what the Sufism is. Sufism के जो कुछ concept है कि ego या नफ्स का purification, फना, zikr, these are the terms associated with the Sufism. Then the integral yoga. Integral yoga has been given by the person called Sri Aurobindo. Sri Aurobindo has a very interesting life in itself. Previous to that, he was a freedom fighter. Then he was being put into the jail, and in the jail, he got some realizations. He became enlightened, and he has given his own concept called this Sri Aurobindo ki jo wo hai. So he talks about the psychic being, expiration, surrender, rejection, kind of. So he is himself kind of a very kind of कोर में यहाँ पे क्या है, कोर में अगर आप समझो पूरी इंडियन साइकोलॉजी को, तो ये है कि हमने अपने आप को उन चीजों के साथ आइडेंटिफाई किया हुआ है जो चीज हम नहीं है, जो चीज हम नहीं है उन चीजों के साथ हमने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है, और जो चीज हम हैं रियली में उसके साथ हम अपने आप को डिटैच किया हुआ हम जानते हैं, सबों में यही है कहानी, ठीक है। तो ये समझ लो कि जिसको हम ईगो बोल रहे हैं, दैट इज माय रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद द थिंग्स व्हिच आई एम नॉट getting. This is basically what the root cause of the suffering. And then Patanjali talks about the चित्त वृत्ति निरोध. अब आप सोचो कि चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा समझो कि ये क्या हो रहा है चित्त वृत्ति निरोध। आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं कंपल्सिव थिंकिंग, सीडी, चित्त वृत्ति निरोध। भाई ये जो हमारा जो थॉट कॉन्सेप्ट चल रहा है इसको कैसे रोका है, दैट इज बेसिकली व्हाट चित्त वृत्ति निरोध. It talks about kind of this क्लेशा एंड द समाधि केवल्य, और उन्होंने जो वो ध्यान धारणा समाधि और ये जो है इन्होंने अष्टांग योग की बात कही है, दैट इज बेसिकली व्हाट पतंजलि. सो ही टॉक्स अबाउट द थ्योरी ऑफ माइंड एंड हाउ चित्त, हमारा जो माइंड है वो किन चीजों से मिलके बना हुआ है, चित्त क्या है, वृत्ति के अंदर, फिर उसके अंदर वृत्ति कैसे आती है, उसका निरोध कैसे किया जाए, है ना, क्या क्लेश, क्लेश क्या होते हैं, बेसिकली अ काइंड ऑफ एन इमोशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लेशस. सो here it also, तो all these things are to एक एक टॉपिक को पूरी एक एक क्लास चाहिए बेसिकली, उससे भी ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा एकदम से सब, और थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं. ओके, तो भगवद गीता एंड बुद्धिज्म में बेसिकली आपको दिखेगा, दे टॉक अबाउट द गुना थ्योरी, सत्व, रजस, एक्टिविटी एंड रेस्टलेसनेस, तमस, इनर्शिया एंड कंफ्यूजन, काउंसलिंग, कर्म योगा, ये हमने बात करी ली. मेंटल हेल्थ में हमें क्या वो क्या बात करते हैं कि इक्वानिमिटी होनी चाहिए, सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए, रेगुलेशन ऑफ डिजायर होगा तो हम मेंटली एकदम हेल्दी रहेंगे. And then there is a Buddhism who talks about a four noble truths: suffering, cause of suffering, cessation of suffering, and path to the cessation of this suffering. Anatta, denial of enduring ego self. The apparent self is constructed through aggregates and processes. Mindfulness, अभी सबसे ज्यादा अगर स्टडी होती है, मतलब अगर आप पिछले 10 सालों में देखोगे
तो there is a growing increase of mindfulness. And again इस चीज को मैं बार बार बोलता हूँ, this is the unfortunate thing. Buddhism originate in India, getting, but we don't talk about mindfulness much. In the West, almost all the, what we can say, Ivy League universities have the mindfulness lab where they not just practice but they are doing a deep researches on it and they are accepting it there. That is basically what. एंड आजकल आपने सुना होगा उसको, जो सबसे माइंडफुलनेस का मतलब नॉन जजमेंटल अवेयरनेस, ऑफ मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस, अवेयरनेस विदाउट क्लिंगिंग, ऑब्जर्विंग बॉडी, फीलिंग, माइंड एंड मेंटल ऑब्जेक्ट्स. सो किससे रिलेटेड है? विपस्सना. सुना होगा विपस्सना का मेडिटेशन बहुत सारे लोग करते हैं. Okay, so Buddhism offers a phenomenology of consciousness and a practical method of reducing the cravings. That is the point. Next is basically Sufism. Sufism में ego dissolution and all that thing and integral yoga, go through it. Time is less. ये है academic psychology का chronological development में how it started. So it started with first department or lab started in Calcutta University, B.N. Seal's lab in 1905. Actual and then N. Sen Gupta introduced psychology, introduced through Western models. उसके बाद धीरे धीरे वो जो है उसके बाद उसका सोशल रेलिवेंस भी होने लगा. फिर भी अगर अपन देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में till 1970s तक और 60s तक there was no any separate psychology department. It used to be joined with philosophy. So जो लोग philosophy पढ़ते थे वो psychology भी पढ़ते थे. Psychology and philosophy as a combined department. From 1960-70 it gained relevance and धीरे धीरे वो अपने आप को सेपरेट होने लगा और फिर उसके बाद से अलग अलग सेपरेट डिपार्टमेंट साइकोलॉजी के हमारे इंडिया में बेसिकली बनने लगे. ओके, बट फिर भी अभी तक जो हमारा जो इन्फ्लुएंस था साइकोलॉजी में वो पूरा वेस्टर्न ओरिएंटेड ही था. बट बेसिकली तो अगर आपने सुना हो दुर्गानंद सिन्हा जी, जनक पांडे जी और अभी ये तो फेमस है ही अपने गिरीश्वर मिश्रा जी. These are some of the main figures who work towards indigenization of the psychology, and they actually started introducing Indian psychology. Then they started talking about it, Indian psychology in the academia, and what kind of psychology is basically is what is Indian psychology and looking at it. So that is the thing. Next is basically ये और एक कॉन्सेप्ट है आपके ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी. आई थिंक अभी के लिए इतना ही सही है. उसके बाद जो है हम नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा. विल टॉक अबाउट, लेट मी चेक, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, बुद्धिज्म. ओके, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जिसको हम जो है आई थिंक नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.